Hi everyone, welcome to my channel Psychologist Kusum. So today we're going to talk about how to be a good counselor in India. Um, and this is going to be a very random video for all the people. If you're studying at IGNU or if you're doing a regular course, if you have already done your masters, then also specifically the most important thing is you need to read a lot, because this is what my personal observation is, और जो मुझे जितने भी लोगों से बात करके पता चला है कि पीपल डोंट नो कि हम क्या कर रहे हैं, है ना. बिकॉज वी मोस्टली हैव बीन ट्रेन्ड टू डू मोर ऑफ रिसर्च वर्क रादर दैन more of therapy based. So if you want to be a good therapist, you should firstly know कि आप what kind of cases you can get. After having a good idea of cases, you need to so first most important thing is reading. Second most important thing is that you should be थोड़ा सा free. आपको you should not be hesitant to take cases. आप cases लेकर ही समझ आएगा कि उनके हाउ यू हैव टू डील विद दोज केसेस. काफ़ी बार ये देखा गया कि इवन इफ़ यू हैव डन योर मास्टर्स, इवन इफ़ यू हैव डन योर PhD, पीपल आर लाइक वी कैन डू मोर ऑफ रिसर्च वर्क, बट थेरेपी में वी आर नॉट दैट कंफर्टेबल एंड they don't tend to take therapy even though they can be good therapists. Yes, I completely understand that there are a lot of people who are taking therapy who are not trained enough also, and who are not a good therapist. That is leading to other problems in mental health issues, mental health field as mental health as a field as well, that I am aware of. But here the idea is something else today, and I'm not going to talk about that. Here I want to discuss something else. How you can be a good therapist is what my focus is. I'm not going to take into consideration who are doing what they are doing, whatever they are doing. That is not the focus right now, today at least. So first thing is reading books. Second thing is making sure that you tend to टेक दैट स्टेप ऑफ टेकिंग थेरेपी. क्योंकि मैंने खुद अपने आसपास अपने फ्रेंड्स में देखा है कि they'll be like they are good, they have knowledge, they have lot of नॉलेज इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी एज अ फील्ड, बट वो खुद ही अपने आप को बोल देते हैं कि यार नहीं यार, आई डोंट वांट टू बी I don't want to take therapy. I don't think I can do it. It's not about I can do it. It's about आप वो effort करो to learn that. अगर आपको initially नहीं समझ आ रहा है कि तो इंडिविजुअल केसेस मत लो. वाई डोंट यू टेक केसेस इन विद अ सुपरवाइज़र इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप केसेस ले पी रहे हो तो पहले लाइट केसेस लो जो आपको लगता है कि आप मैनेज कर पाओगे, स्ट्रेस, मिनिमल स्ट्रेस वाले. वाई डू वांट टू टेक OCD का केस या फिर एनी मेजर केस क्यों लेना है. तो पहले स्टार्ट विद स्मॉल केसेस वेयर maybe career counseling, maybe a person is not able to concentrate well, small cases wherein little bit intervention is required, which can help you understand things in terms of, because when you're going to read, ऐसा नहीं है कि हर कोई हर कोई अपने आप से बच जाता है. they also read. Lot of people, I also know psychologists who are working in the field for so many years, 5-6 years. They also, if they get a case when they are stuck, they also consult other people. So in the same way, first is reading books, second one is making sure that you are taking cases, and third one is having a good supervisor. So it is very important. कोई बताता नहीं है साइकोलॉजी फील्ड में what is a supervisor, do we need a supervisor. So even the psychologists who are there in the field, they also have supervisors. So supervisor is जैसे normally when we are in college we have supervisor जो कि हमें supervise कर रहे होते हैं when we are taking therapy. That's a different thing. उसका मतलब होता है कि हम जाते हैं, अपना कोई भी केस हमारे पास आता है, हम उन्हें बताते हैं कि दिस इज़ अ केस, दिस इज़ हाउ आई वांट टू अप्रोच इट, एंड देन दे सजेस्ट इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ अप्रोच, व्हाई डोंट यू यूज़ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, व्हाई डोंट यू टेक दिस इन दिस डायरेक्शन. हमारे खुद के जो भी बायसेस है वो अगर उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हम जब थेरेपी ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ें दे गाइड अस इन दैट वे. बट देन there are once you are done with your college, then you can have your own supervisor as well. So let's say if I want to take cases. So when I take cases, that I am stuck somewhere. When I'm stuck, I'm going to ask certain people for help, but that is also paid. Okay, so let's say if I'm taking a case which is around 1,000 rupees, then it might be the case that for that particular session जो मैं लेना चाहती हूँ, I might want to take help from a supervisor which is going to
charge a certain fee of 700 or 500 because I want to discuss, I'm taking their help. जो भी उनका knowledge है, I want that help from them, so it won't be free of cost. तो वो चीज़ें भी होती है. So I might ask them for help कि how should I approach this case further. That is them, they giving their advices, so that is them helping us, that is charged. But at least if you're going to do this for 2-3 years, whatever your minimal you're going to earn, that is fine, but you're going to gain a lot of knowledge. They might give you certain resources that you can use in your therapy, and you, with that help, you can create your own resources, how it is done. You can ask them how the notes are done. So वो सब चीज़ें हम पूछ सकते हैं. That is also a good way of moving further when we are taking therapy. And foremost important thing is ऑर्गेनाइज योर सेल्फ. सो थेरेपी में हमें यही समझ नहीं आता है कि अगर हम ले भी रहे हैं तो कैसे अपने क्लाइंट्स की फाइल को मेंटेन करें. तो दैट इज़ ऑल्सो अ स्किल विच वी नीड टू लर्न विद टाइम. रीड मोर अबाउट इट. सी रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. मेरा फोकस आता है रीडिंग पे इसलिए रहता है क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है लोगों को पता ही नहीं होता है. दे जस्ट वांट टू डू इट. उनको समझ ही नहीं होती है कि वो क्या कर रहे हैं. सो जिसकी हम थेरेपी ले रहे हैं, अरे पता तो होना चाहिए ना कि थेरेपी में क्या होता है. देन ओनली यू कैन टेक, राइट. यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ केसेस यू आर गोइंग टू गेट. और सिर्फ पढ़ने से कि मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की ये होती है, कॉग्निटिव जो भी स्टेप्स है ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट. तो ऐसे नहीं होता है ना कि हमें सिर्फ स्टेप पता है तो वो चीज़ है. हाउ इट कम्स इन टू therapy, how it comes into the client's life, how reinforcement and punishments comes into the client's life. all these things जब हम बुक्स रीड करते हैं तब हमें एक पर्सपेक्टिव पता चलता है. बट व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग थेरेपी तब हमें एक चीज़ समझ आती है, दैट इज़ हाउ बुक्स एंड द द ह्यूमन बींग्स जो लिखा हुआ है, जो ह्यूमन बींग्स है वो कैसे रिलेटेड है उनकी लाइफ में. कैसे हमें पता चलता है कि ओह दैट्स वेयर आई कैन सी दिस पर्सन इज कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग टू बी अ रीइंफोर्समेंट. और जब उसे वो चीज़ मिलती है तो यस द पर्सन टेंड्स टू डू दिस. एंड हाउ वी एज अ थेरेपिस्ट कैन इंट्रोड्यूस सर्टन काइंड ऑफ पनिशमेंट्स एंड रीइंफोर्समेंट्स इन अ क्लाइंट्स लाइफ. वो सब चीज़ें भी हमें आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीज़ समझने की ज़रूरत है. I hope this video helps you in ways I wanted it to help you. And yeah, whatever questions you have, please put them in the comment box. You can follow me on Instagram. You can join my YouTube channel by subscribing to it if you feel like. And yeah, if you want to be connected personally, then you can join the psychology community that I have on WhatsApp. Thank you so much for watching my video.